Good evening. Today we're going to share start the market segmentation. So, market segmentation is a marketing strategy in which select groups of consumers are identified so that certain products or product lines can be presented to them in a way that appeals to their interest. Okay, so this is called the market segmentation. So market segmentation, it is nothing, simply it is the identified how to deal with the customers, how to deal with the customers product, what are the lines of the interest and what are the lines of the product. Apart from that, the customer interest should be given the priorities. This all phenomena comes under market segmentation processes. Okay, and there is also one another important task we need to remember, that is what are the interest that lies in the market segmentation. It's not about the process, it's all about the segmentation procedures, which can be divided into different categories, such as the interest of the customer, the productions of the customer, the prices of the customers. All these are relevant to the market segmentations. It means it is a complete process through which we can identify what the actual demand or needs of a customers. Okay, what are the actual demands or need of a customers. Okay, this is the market segmentations call. Another example, in my previous class I was not discussed completely about the market segmentation because it's in unit 2, that's why. Okay, now I want to make it more clear, more identified. Okay, there is another way, or another lines. Okay, now that is the product lines. What is the product line means? The product line means what are the customers demand, and on the basis of the demand, what are the products that are to be lined up in against of customers need and requirements. That is called product line. Another important example we can give about the product line, it is that is some groups of customers, they go on for some. I have been given some previous examples. Some groups of customers are there who given more priorities on brand, apart from the normal customers who basically demanded on normal goods and processes. Okay, so this is the first priorities. Okay, now suppose for example some branded clothes are there. Okay, some branded clothes are there. Now according to that, few customers are in the lineup or in the groups who are in demand of those branded lines or those branded products only. Now, what the salesman or retailer used to do for those specific customers, they used to provide those branded clothes to those specific customers. Okay. Now, suppose this branded clothes are used by, for say, for an example, customer A. Customer A represent those customers who you want to use the branded clothes. Now, customer B are those qualities of customers. They only not only depend on the branded, but if they get going to get for branded, okay, fine, sure. Otherwise, they will move to some another qualities, some another brands. This is the segmentations of customers called consumer B. Another customers are there who doesn't specifically rely on brands. Okay, they depends on some normal clothes. Okay, they need to have a shirts. Okay, whatever the qualities, whatever the prices. Okay, sorry, no, whatever the qualities, no, whatever the price. Okay, they only depends on the quality and color. Say for an example, these all comes under customer C. Now customer D are say are those customers who basically depends on those clothes which are being used in a daily life, in a daily routine. Suppose they wanted t-shirts of any brand, not of any brand, they doesn't go for any brand, sorry, they doesn't go for any brand, they just go for color, they just go for the price. So this product lines
as being divided into customer A, B, C, D are all line up, and these are the market segmentations of two different customers. Okay, so you can also say that these are the product lines to different, what you can say, different customers. Okay, this is called the market segmentations in complete. Okay, now another important points is there. Another important point is there. Another important task or point is there. ওই আলমারিতে। Another, ma'am, please can you process to next slide? Okay, thank you. Okay, a positioning strategy is a set of actions and process that are designed to improve the image and visibility of a brand's company or product. The next is target and positioning market segmentation. Target and positioning market segmentation. Listen, what all the salesmen and clients used to do, first of all, they targeted, first of all, they target the customers, they target the markets. Okay, and after the targeting the market, now they positions their markets. Okay, and this is the way there's been the divisions of market segmentation. This is the division of market segmentations. Okay, this is the way they do the market segmentation. See what is has been written over here. A positioning strategy is a set of the actions and the processes, okay, this and processes that are being designed to improve the image and visibility of a brand, company, or product. Visibility of a brand, image, product. Okay, visibility of a brand, image or product. ठीक है, फिर से मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं. ये एक एक्शंस होता है एंड प्रोसेसेस होता है. ये बहुत सारा एक्शंस है और बहुत सारा प्रोसेसेस है जो कि डिजाइन करता है कैसे, जस्ट टू इंप्रूव द विजिबिलिटी, इमेज एंड ब्रांड, कंपनी और प्रोडक्ट. ये 4 पॉइंट्स और 4 क्राइटेरियाज पे ये फुल्ली विजिबिलिटी या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिपेंड करता है. हमेशा याद रखना, ये होता है, पहला होता है इमेज, दूसरा होता है विजिबिलिटी, तीसरा होता है कंपनी, चौथा होता है प्रोडक्ट. ओके, ये चारों में डिफाइंड किया जाता है कि प्रोडक्ट लाइंस या फिर पोजीशनिंग्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन कैसा होना चाहिए या टारगेटिंग कैसा, कहां कहां टारगेट करना चाहिए, वेयर टू टारगेट. ओके, इमेजेस, विजिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, brand, company, and products. This is the they used to set the target. Now, a product marketer should plan for how people in the market will think about their product, as truly as only product positioning that counts is what your customers think, as the product has a life of its own. If a customer isn't thinking about you, your product doesn't occupy a positions. Look what a beautiful, the last line, it explains everything. Suppose suppose some salesman, okay, they have lined up lot of brands, lot of images, lot of visibility of a product in his particular shop, but unfortunately none of the customer turn up to choose those clothes. None of the customer turn up to choose those clothes, choose those brands, or choose those products. Now finally what will happen? Finally what will happen? they will what will happen? Finally what will happen? The salesman or the shop owner or the company of that particular organization, or the organization of that particular company, or the company or any organizations will fail to meet up the expectation of that particular products line. The next one is successful positioning strategy not only focus on where the product is today, but how the product could potentially progress to where you would ideally like
it to be in near future. Now, successful positioning of the strategies. This is so very important that if you fail to implement the strategy of a market, then you will ultimately going to be in a part of a failure or in the lines of a failure where many organizations has left it out. Okay, why? Because they fail to organize in a proper way, or they fail to allocate the proper product lineups. Okay, the image, the visibility of a products. Okay, they all fail up to do so. That is why to become a successful in the business, to become a successful in the position, it is very much essential that you should be always in a product line. You should always maintain the successful strategy in a four product line by which you can be or you can become successful in near future. This is called the positioning and target of the market segmentation. हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले पोजीशन आता है कि टारगेट आता है मार्केट सेगमेंटेशन में। ये आपको जनरली ये क्वेश्चंस एचआर राउंड में पूछा जाता है कि टारगेटिंग सबसे पहले किया जाता है कि पोजीशनिंग। सबसे पहले टारगेट किया जाता है, पहले टारगेट करेंगे तब ना जाके वो पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास टारगेट ही नहीं है तो कहां पर जाके पोजीशनिंग करेंगे। आई ऑलवेज गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप। Suppose you want to open a startup in Sakchi market. First of all, you need to be allocate a particular specific place. This is will be your target. I want to open a startup in Sakchi. This is your target. Now you will going to see the positioning of that particular target which you have set. That if the target is being settled here, whether I could be successful in my career, in my whether I could see the face of profit or not. This is the next part. But before that, we should be first of all target, and after that we can be positions. Then only we can understand the market segmentation. हमेशा ये बात याद रखना कि पहले टारगेट किया जाता है, उसके बाद हम उस टारगेट को ले जाके फिर पोजीशनिंग क्रिएट करते हैं। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट पेज मैम। Ma'am, please, next page. Yes. Now, what are the types of positionings? There are various types of positionings are there. Okay. We are going to read one by one. What is the first positioning? That is, number one is customer needs. Knowing your target market and how you will fulfill their specific needs. Okay, knowing your target market and how you will fulfill their specific need. This is the first priority. Customer need is one of the first priorities. Every businessman or every organizations or every salesman or retailer needs to do that. क्या कि what is the target marketing and how you will going to fulfill the specific needs of customer. This one is the most important. This one is the most important part. Okay, what is the specific need of some specific customers, what they want, whether is it be visibility to give the product line in a specific time and date. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप ये चीज एक बहुत बार आप देखिएगा कि आप कोई सा भी दुकान में जाते हो, वहां पर जान पहचान दुकान है, कुछ कॉस्मेटिक्स के बारे में, कुछ ब्रांडेड कॉस्मेटिक आप उनसे डिमांड करते हो, वो आपसे कहते हैं कि आपको एक या दो, अभी तो फिलहाल ये ब्रांड्स नहीं है, मैं एक दो दिन में इसको आपको ला के दूंगा। आप दूसरा दिन फिर वहां जाते हैं, ठीक है, आप दूसरा दिन वहां जाते हैं, जाके आप देखते हैं, आप उस ब्रांड के बारे में डिमांड करते हैं, वो उस शॉप में जाके आपको वहां पर भी निराश मिलता है, वो नहीं ला के देता है। ऐसा एक दो तीन चार दिन होने के बाद कस्टमर्स क्या करते हैं जनरली, वो दूसरे दुकान में या दूसरे कोई ऐसा बड़ा दुकान में शिफ्ट हो जाते हैं। और एक बार अगर वो कस्टमर उस दुकान से शिफ्ट होके दूसरे दुकान में चले जाते हैं और वही सामान
उस उनको दूसरी दुकान में मिल जाते हैं, तो गौर कीजिए, इन मैक्सिमम केस द कस्टमर्स नीड एंड शिफ्ट ऑफ द इंटरेस्ट will be on the second shop. Okay, मैक्सिमम चांसेस आप कस्टमर को लूज कर दोगे, आप कस्टमर को कट कर दोगे. That is why marketing strategy na is one of the difficult tasks to understand the customer's behavior and needs, because customer need changes time to time. टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहता है, नीड्स, डिमांड, विजिबिलिटी, ये चेंज होते रहता है कस्टमर्स का. इसलिए आप कभी भी एक जगह, एक वक्त, एक ही चीज, एक ही ब्रांड आपको लाइन अप करके कस्टमर्स को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे. इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. यू नीड टू बी लाइन अप विथ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, आप कोई सा भी किराने की दुकान में जाते हो, साबुन का कितने टिकी आप देखते हो, कोई एक ही ब्रांड रखता है क्या साबुन? Suppose some of the customers using some Synthol, some of the customer using Liril, some of the customers using Margo, some of the customer using Himalaya, some of the customers they go for handmade shops. These are all branded shops. A price of a handmade shop is near about 1,000. They used to have. Some of the shops are there, some of the customers are there who go for Lux and all, Palmolive and all. Lots of demands and brands are there. At same way, lots of toothpaste which we are using early in the morning, that are also of different brands are there. Dabur, Colgate, Close Up, Pepsodent. Okay, lots of things are there, lots of different varieties are there. अगर आप दुकान पे एक ही वेराइटीज को आप रख दोगे तो कस्टमर फिर वो इंटरेस्ट, वो चार्म बिल्कुल नहीं रहेगा. और अगर कस्टमर एक बार उस दुकान से चले जाते हैं दूसरी दुकान में, और दूसरे दुकान में जाके वही डिमांड्स, वही नीड्स उसका फुलफिल हो जाता है, तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि दोबारा घूम के फिर आपकी दुकान पे नहीं आएगा. नेवर एवर. इज इट क्लियर? दैट इज व्हाई कस्टमर नीड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. The next types of positioning में production price, product price. Positioning your brand product as competitively priced, competitively priced. Okay, product price, positioning your brand product as competitive priced. Okay, now you need to fix the prices which is being very much competitive. Okay, the price should be competitive. प्राइस को हमेशा कंपिटिटिव में रखना चाहिए. अगर कंपिटिटिव प्राइस आप नहीं रखते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपिटिटिव? ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम. एक मार्केट सर्वे करके देखा गया है कि अगर आप कस्टमर से सही दाम या सही प्राइस आप नहीं लेते हो, ठीक है, आप कुछ ऊपर नीचे दाम ये करते हो, और वो चीज अगर आप पकड़े जाते हो, तो फिर वो कस्टमर आपके दुकान पे आना छोड़ देगा. होता है ना, देखिएगा, बहुत सारा कस्टमर होता है कि चलिए ये 120 रुपया का सामान है, मैंने आपको 90 रुपया में दे दिया. क्यों भाई? आपको प्रॉफिट क्रिएट करना है ना. इसका मतलब क्या? वो प्राइस 50 रुपया का है, आपसे 40 रुपया वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्राइस. दैट इज व्हाई द प्रोडक्ट प्राइस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, आप इस चीज से गैम्बल नहीं कर सकते हो, जुआ नहीं खेल सकते हो. दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट क्वालिटी. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट? Positioning your brand product as high quality. Okay, you always remember the quality of the product should be of a very high quality, not a very high quality, but a good qualities. Okay, because to run a shop you need to have a lot of qualities in your shop. Okay, that is why to line up all the products in the shop, you need to keep the quality products. ठीक है, और अगर क्वालिटी प्रोडक्ट सब रखोगे तो फिर आपको कस्टमर अट्रैक्ट होगा. द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट यूज एंड एप्लीकेशंस. प्रोडक्ट यूज एंड एप्लीकेशंस क्या है? एसोसिएटिंग योर ब्रांड प्रोडक्ट with a specific use. Product use and applications. The next one is competitors. Positioning your brand as better as than other competitors. This is called the process of advertisement. आप कितने अच्छे एडवर्टाइजमेंट करते हो, इसका ऊपर आपका प्रोडक्ट्स का सेलिंग होता है, और उसके ऊपर आपका कंपटीटर्स क्रिएट होता है. ओके, द मोर यू एडवर्टाइज अबाउट योर प्रोडक्ट,
the more it will going to have a competition. You will going to have a very good competition in the market. Okay, so these are the four P's of, you can say, the positioning, okay, of a market segmentation. They are called four P's. Number one is promotion, number two is price, number three is place, and number four is product. Promotion, price, place, and product. This all four are important for positioning of the market segmentation. Ma'am, can you go to the next slide? Okay. There are an acronym you can remember of four. So next क्या है? Requirements for effective segmentations. What are the requirements for effective segmentation? Segmentations effective होने के लिए क्या क्या requirement है? There's an acronym you can remember for the essential factors in effective and successful market segmentation. The acronym is ADAMS, ADAMS. The acronyms stand for five criteria. Number one is accessible. Number two is differentiable. Number three is actionable. Number four is measurable. Number five is substantial. ठीक है? Number one is accessible. Number two is differentiable. Number three is actionable. Number four is measurable. Number five is substantial. So these are the five acronym which we call ADAMS, and these are the most effective requirement for market segmentation. You can see this one is the most effective way or of market segmentation. Most effective, ये most effective acronyms है. पहला क्या है? पहला है A for accessible. पहला है A for accessible. Look, accessible means that customers and consumers are easily reached at an affordable cost. This help to determine how certain ads can reach different target markets and how to make ads more profitable. This is called accessible. Accessible means you have open a shop, you open a company, you open an organization. It should be affordable cost so that customers can reach with affordable cost. अब एक समर लाने के लिए अगर आप उसे 32 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा एक ब्रांड क्वालिटीज लाने के लिए, इतने सारे ह्यूज एक्सपेंसेस करके, तो फिर शायद ही कोई कस्टमर वहां तक जाता है. ठीक है, तो एक्सेसिबल का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है या फिर कोई भी ऐसा कंपनीज या फिर कोई भी ऐसा रिटेलर या शॉप ओनर देखता है कि मेरा जो दुकान है वो अफोर्डेबल है कि नहीं, वो एक्सेसिबल है कि नहीं. Accessible in the sense it should easily be affordable to every customer so that customers can reach without any more expenses. Okay, now suppose for an example I want to purchase a pair of shoes. Okay, what do you think? I should go to travel for 60 or 60 or 100 kilometers to purchase a brand quality of shoes? No. Online mode is there. Through online mode, I can purchase by sitting at home. It is quite affordable. Why I just expense my fuel, expense my cost just to purchase a pair of shoes? No. That is why nowadays the retailers or the shop owners, they used to have preferences to reside their shop in a particular positions, in a particular corner where every customer from every directions can reach very easily. This is called accessible. The next is differentiable. The next point is differentiable. What is the meaning of this word? Differentiable
when segmenting the market, you should make sure that different target markets respond differently to different market strategies. If a business is only targeting one segment, then this might not be as much of an issue. Okay, as much of an issue. तो differentiable क्या होता है? When segmentation the market, you should make sure that different target markets respond differently. Different target market respond differently to different markets strategies. If a business is only targeting one segment, then this is might not be as much of an issue. Different segment means in every segment it should be the retailer or a salesman should target every segment. Suppose a salesman of particular segment of a, okay, they are only supplying the shirts, they are only supplying the shirt. Now, okay, fine, but the problem will going for a long run. What will happen now? There is a varieties of shirts are there available in the markets of different price, of different qualities, of different expense, of different brands. Now, suppose a salesman only targeting a simple specific half or full shirt to the shop, specific shop. Will it be possible to that the retailer or the organize or the company which they are preparing a full shirt can going to capture the full market? No, it is quite impossible. As because if you want to stay or if you want to be in a lineup in the competitions, then what will happen? You need to have a proper planning. You need to have a proper segmentations of a different products of the same quality of same goods. Suppose फुल शर्ट आप अगर बना रहे हो, आप उसे अगर सप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ फुल शर्ट नहीं, आपको उसका वेराइटीज रखना पड़ेगा. फुल शर्ट बहुत तरह से होता है, बहुत क्वालिटीज का होता है, उसको आपको वेराइटीज रखना पड़ेगा. और सिर्फ अगर फुल शर्ट आप रखोगे उससे फिर काम नहीं चलेगा. आपको अकॉर्डिंगली उसके अलावा आपको कुछ हाफ शर्ट्स, उसके अलावा आपको कुछ डिफरेंट कलर्स, उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टी शर्ट्स, ये सारा कुछ रहना है. सपोज इसका एक और सिंपल सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ. फर्ज करो एक छोटा सा एक मोमो का शॉप, छोटा सा मोमो नहीं, मैं एक छोटा सा एक गोलगप्पे का स्टॉल मैं बताता हूँ. ये एग्जाम्पल और ज्यादा क्रिएट होगा डिफरेंशिएबल के लिए. एक छोटा सा गोलगप्पा का स्टॉल, पहले वो क्या करता था, उस शॉप ओनर ने सिर्फ और सिर्फ पानी पूरी ही रखता था, सिर्फ और सिर्फ पानी पूरी रखता था. ठीक है. अब उन्होंने उसमें से थोड़ा सा वेराइटीज डालने की कोशिश की. क्या उन्होंने आलू चाट टिकिया बनाने का कोशिश किया, घुगनी जो होता है वो बनाने के लिए किया, दही पापड़ी उन्होंने उसमें मोर एड ऑन किया है. उसके बाद उन्होंने कुछ चटनी गोलगप्पा एक होता है, फ्लेवर आता है चटनी वाला गोलगप्पा, दही वाला गोलगप्पा, उसमें भी एक वैरायटी जुलूंग रख लिया है. ठीक है. चटनी गोलगप्पा अलग से देता है, दही वाला गोलगप्पा अलग से देता है, टिकिया चाट अलग से, पापड़ी चाट अलग से. बहुत सारा एक छोटा सा स्टॉल में, सिर्फ पानी पूरी बेचने वाला ठेला में इतने सारे एड ऑन किया है. तो व्हाट विल हैपन, द कस्टमर विल अट्रैक्ट मोर, द कस्टमर विल गोइंग टू अट्रैक्ट इट more and more. Okay, this is called differentiable. Now actionable, what is actionable? Market segments need to be, market segment needs to be actionable, meaning that they have practical value. Market segment should be able to respond to a certain market strategy or program uh, and have outcomes then are easily quantifiable. Okay, एक्शनेबल का मतलब होता है, क्या होता है एक्शनेबल का मतलब होता है कि आप किसी सामान को एक अच्छा प्रैक्टिकल, एक अच्छा वैल्यू
उसमें टैग ऑन करोगे, टैग करोगे। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखते हो जिस प्रोडक्ट में एमआरपी लिखा रहता है कुछ, दुकानदार आपसे चार्जेस कुछ और करता है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? एमआरपी कुछ लिखा रहता है, मार्केट वैल्यू कुछ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखा रहता है वो एक अलग रहता है। जो सेल्समैन है या फिर हाँ, वो दूसरा, मतलब क्या, दूसरे प्राइसेस आपसे लेते हैं, कम ही लेते हैं। What does it mean? It is the simple meaning that actionable amount of price they charge on particular product. So what will happen? It will be quantifiable and it will be easily accessible to the customers. This actionable is done also on the basis of advertisement. ये जो एक्शनेबल है, ये इजिली जो होता है, एक्शनेबल होता है क्वांटिफिबल के ऊपर, और कुछ क्वालिटीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, और प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल। द नेक्स्ट वन इज मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है द साइज एंड द परचेजिंग पावर प्रोफाइल्स ऑफ योर मार्केट should be measurable, meaning there is a quantifiable data available about it. Consumers profiles and data provide marketing strategies with the necessary information on how to carry on the campaign. Okay, so this is the most important part, is measurable. Every retailer, every shop owner, or every organization who are selling any product, they need to keep a perfect shape, size, quality, image, different varieties of products in their shops. Why? Because if you want to see the profitable, then you need to do this measurable actions. Why? Different data are need to be available, of different color, of different size, of different qualities, of different brand. There is must be some information the customers, the about the customers, they need to keep. What type of customers? मैंने अभी जस्ट पिछले पिछले वाला स्लाइड में आपको एग्जांपल दिया था ना, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी। किस तरह कस्टमर ए रिप्रेजेंट करता है, क्या कस्टमर ए रिप्रेजेंट करता है, कस्टमर बी क्या रिप्रेजेंट करता है, कस्टमर सी क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर कस्टमर डी क्या रिप्रेजेंट करता है। ये सारा एक डिफरेंट, ये सारा कुछ बहुत सारा, ये अच्छा, ये सारा कुछ एक डिफरेंट, ये सारा कुछ एक डिफरेंट मेजरेबल डेटास को दर्शाता है। ये सारा कुछ जो है एक मेजरेबल डेटास को दर्शाता है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट है सब्सटैंशियल। द मार्केट ब्रांड शुड वांट टू बी पेनिट्रेट, शुड बी सब्सटैंशियल नंबर। The market brand should want to penetrate, should be a substantial number. Yeah, you should clearly define a consumer's profile by gathering data on a age, gender, job, socio-economic status, and purchasing power. Okay, this is called substantial. How to create a market value? Okay, how to create a market brand, or how to create a market value? This is the only way you can create a market brand or value. What is the way? Just to define the purchasing power through brand, age, color, size, maximum productivity of that particular product which the customer is using. This all categories line up in a substantial way. Okay, this all are having a some specific purchasing power. Okay, so these are the
requirements of for effective segmentations, which is called ADAMS. A stand for accessible, D stand for differentiable, C stand again A stand for actionable, and then measurable, substantial. These are the main acronyms. Okay, these are the main acronyms. Always remember one thing, these acronyms are so important that you cannot ignore this acronyms for the things. Okay, this one is very, very important. Ma'am, can you go to the next slide, please? Okay, the next one is what are the types of segmentation? Number one, behavioral segmentation, intent segmentation, geographic segmentation, firmographic segmentations. Okay, these are the types of segmentation. What is behavioral segmentation? Behavioral segmentation help companies to determine the buyer's purchasing habit and behaviors by looking at the digital footprint organizations, which can group up the customers. Okay, this is called the behavioral segmentations. Then comes to the next is intent segmentation. These segmentation include website, activities, time page, internet, keywords. Okay, how the customers using or utilizing their time on the nets. Okay, आप तुम देखते हो ना Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, या फिर बहुत सारा ऐसे ब्रांडेड जो एप्स है, देखिएगा बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं वो इस ऐप पे ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज करते हैं कि शायद कुछ सेल्स आज मिल रहा है, शायद कुछ आज डिस्काउंट मिल रहा है, मैं अगर कुछ डिस्काउंट मिले तो अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मैं परचेज कर लूँ. ठीक है, इस सेगमेंटेशन को इंटेंट कहा जाता है, इंटेंट प्रोसेस ऑफ कस्टमर्स. नेक्स्ट है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, how the buyers being subdivided through the different locations such as zip code, region, seasonal climate, population density, and according to this they allocate different customers of different segments of different areas. The next one is firmographic segmentations. Firmographic segmentations also means how the market conducts come up with B2Bs, business to business needs. Okay, B2Bs का मतलब business to business. How the segmentations or marketing connected with business to business. Okay, some companies इसमें डील करते हैं, सबसे ज्यादा इसमें जो होता है कंपनीज डील करते हैं. कौन से कंपनी? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, लीगल स्टेटस ऐसे जैसे पब्लिक, प्राइवेट, एलसीसी, ओके, एलएलसी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जियोग्राफिक, एनुअल रेवेन्यूज, ये सारा जो होता है फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशंस कहा जाता है. फर्मोग्राफी कोई भी फर्म का उसका सेगमेंटेशंस, उसका यूटिलाइजेशंस को देखा जाता है. मैम कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशंस. ये प्रोसेस ये कंटिन्यू हो रहा है. द नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशंस. According to the demographic segmentations comes according to the age, according to the race, according to the gender, according to the religion, according to the occupation and income. This is called demographic segmentation. Then comes to the next persona of segmentation, which create personalized content that solve the audience problem and target specific segments. Okay, within their market. Then physiographic segmentation. Physiographic segmentation groups ideal and existing customers by personality characteristic, making it a methodic exclusive for business to customers organization. B2C means business to customers organization. This is the way they done their physiographic segmentation. They add their values, they add their goals, they add their lifestyle, they add to the hobbies, attitude, beliefs. Okay, what are the attitudes of a customer, what are the hobbies of a customer, what are the lifestyle of a customer, how they selectively goals, how they select the goals, what are the values
For that, these all are comes under physiographic segmentation. Okay, so these 7 types of, you can say, segmentation processes are there. 7 types of processes, remember. Ma'am, go to the next slide. Okay, customer decision making process. ठीक है, this is called the customer decision making process. The consumer, sorry, not customer, अच्छा ठीक है, the same. The consumer decision making process involve 5 basic steps. What are the 5 basic steps? This is the process by which consumers evaluate making purchasing decision. The 5 steps are problem recognition, information search, alternative evaluation, purchase decision, and post purchase evaluation. Okay, these are the 5 basic steps of, you can say, process of a customers. 5 basic steps of a customers. The 5 steps of a consumer decision making process are problem recognitions, information search, alternative evaluation, purchase decision, post purchase evaluation. Now, what is problem recognition? Recognizes the needs for a service or product. Okay, first of all, every salesman or every retailers or every organization, they must give the priorities, preferences to the customer on problem recognition. Suppose you are having a problem of, what you can say, suppose you want to select any products, okay, but you unable to select that particular product. Why? Because you are in a myth that if I going to purchase, हम लोगों का ना कुछ ऐसा myth होता है, false myth होता है कि, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक एग्जांपल मैंने मार्केटिंग, जब रिसर्च पढ़ रहा था, तैयार कर रहा था, मैंने तब उसमें पढ़ा कि अभी एकदम करंट टॉपिक में बात किया था। उसमें एक, हम लोग मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम गुड्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन या फिर टीवी, उसमें सबसे ज्यादा सैमसंग वीडियो, सैमसंग या फिर वर्लपूल या फिर और क्या, इस तरह का कुछ, मैक्सिमम हम लोग सैमसंग या फिर वीडियोकॉन, वीडियोकॉन बहुत कम है, सैमसंग मैक्सिमम यूज करते हैं। ये सारा कुछ सैमसंग का ही ज्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं। एवरीबॉडी, इफ यू सी द टीवी, दे यूज अ सैमसंग। ठीक है, सैमसंग एक ब्रांड आइकन हो गया है। नाउ, वॉशिंग मशीन में अगर हम लोग जाए, तो हम लोग सबको एक पता है कि वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन, फिर एलजी वॉशिंग मशीन, सॉरी एलजी वॉशिंग मशीन नाम नहीं याद आ रहा था, एलजी वॉशिंग मशीन, वर्लपूल, दीज आर द टॉप ब्रांड। अब अगर कोई इस ब्रांड को, एक मिथ बना हुआ है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कोड्स मुझे लेना है, तो मैं इस 3 ब्रांड को छोड़ के दूसरे ब्रांड पे जाऊंगा ही नहीं। ये एक मिथ बना हुआ है कस्टमर्स में। अब ये मिथ को ब्रेक कौन करता है? मिथ को ब्रेक करता है सेल्समैन। बहुत एफिशिएंट सेल्समैन अगर होता है, तो आपको, आप जो पसंद कर रहे हो उसको छोड़ के ऐसे कोई प्रोडक्ट आपको परचेस करवा देगा जिसमें, जिसके बाजार वैल्यू, मार्केट वैल्यू उतना नहीं है, और जो नया नया लॉन्च हुआ है। ठीक है, जैसे अभी अगर आप गूगल रिव्यूज में IFB का वॉशिंग मशीन देखोगे, तो वो सबसे, मतलब एलजी से भी बड़ा रिव्यूज उनको मिला हुआ है, एलजी से भी बड़ा रिव्यूज मिला है इन केस ऑफ वॉशिंग मशीन। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्रोडक्ट, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द वॉशिंग मशीन। तो वो एक डिफाइन किया हुआ है, जैसे एक मार्केट छाया हुआ है कि एलजी वॉशिंग मशीन सबसे अच्छा होता है, बट नाउ धीरे धीरे IFB कैप्चर कर रहा है। IFB का जो मशीन, मोटर्स, जो उसका कैपेसिटीज, उसका जो वाटर इनटेक, AI सिस्टम, फंक्शन विद AI सिस्टम, ये सारा कुछ इतना अवेलेबिलिटीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा ब्रांड्स अभी मार्केट में छाया हुआ है। तो एक मिथ है, देखो इस मिथ को कैसे धीरे धीरे ब्रेक किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। ये हम लोग का प्रॉब्लम होता है, एक मिथ एक तरह का प्रॉब्लम ही है। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करके कैसे सेल्समैन आपको वहां से हटा के दूसरे प्रोडक्ट पे आपको इंटरेस्ट दिलाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। इंफॉर्मेशन सर्च, जैसे मैंने IFB वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया, तो ये IFB वॉशिंग मशीन का जो एग्जांपल मैंने दिया,
इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया जाता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन वी नीड टू गैदर। अब चलो सेल्समैन ने बता दिया कि वी नीड टू परचेज दिस IFB washing machine, but first of all we also try to gather the information. Now we can anything we all have an information on our head. We are using mobile, we have a good AI mobiles, we can search it on our mobiles and we can gather the information whether the product which is being trying to sell by the salesman to us, whether that particular product is good or not. That is called the information search. The next one is alternative evaluation. What is this? It is about the weights, it is about the choice, it is about the comparative alternatives. Okay, मुझे अगर ये प्रोडक्ट नहीं मिला तो इसके ऑल्टरनेटिव वे में मैं क्या प्रोडक्ट लूंगा, चाहे वो मेरे मैच मेरे मतलब जो प्रोडक्ट लाइन है उसको मैच करे. दिस इज कॉल्ड द परचेज decision. The next one, the last one is post purchase evaluation. What is the meaning of this? It reflect on the purchase they made. Okay, it reflect on what are the purchasing we are made on, whether after purchasing we going to evaluate whether what we have purchased is of good qualities or bad qualities. Okay, this is called post purchase evaluation. Ma'am, can you go to the next slide? Okay, today this is the unit 2's last slide that we will going to discuss, that is organizational and introduction to consumer behavior. Okay, organizational and introductions to consumer behavior. What is the meaning of that? Consumer behavior is concerned with understanding the behavior that consumer exhibit while purchasing, using or disposing the product and services. Apart from the actual procurement of goods and services, the term is also used to refer to the decision making processes. Okay, so what is consumer behavior? Consumer behavior is concerned with understanding the behavior of a customer, what the customer actually want, what the customer exhibits, what is the actual procurements of a customers. This process is called consumer behavior. Okay, now what are the complex nature of a consumer buying process? What are they? Number one, stages of buying process. Number one, there are basically the 3 stages of buying process. What are they? Pre-purchase stage, नंबर 2 परचेज स्टेज, नंबर 3 पोस्ट परचेज स्टेज. ये 3 स्टेजेस होता है. ठीक है, ये 3 स्टेजेस होता है बाइंग प्रोसेस में. ठीक है, तो पहला आता है प्री परचेजिंग स्टेज. दे आर ऑफ 3 सेपरेट you can say steps. What are the 3 separate steps? The first step deal with the aware of what the availability of the product will be able to satisfy the customer or not. जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाता है कि नहीं. दिस इज कॉल्ड द प्री परचेज प्रोडक्ट्स. द नेक्स्ट वन इज सेकेंड स्टेप इज फॉर कंज्यूमर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द पर्टिकुलर नीड टू बी सेटिस्फाइड. The next one is about the informations on a particular relatives, friends, acquaintances. These all are the informations about which we going to recollect all the informations. The third one is the steps is for the consumers to analyze the informations which has been collected, which has been conveyed, which has been considering and which has been well as weighing with the attributes of competing products, veil of attributing the competitive of the product. The third step क्या होता है? The third stage is the consumer to analyze the information collected, considering the advantage and disadvantage of holding money and thereby weighing the competitive of the product. This is the third stage. मैम और कोई स्लाइड्स है? Okay, last slide. Okay, now what is the post purchase stage? What is the post purchase stage? The primary concern with the post purchase behavior is making sure that the consumer needs are satisfied through the products it's used. Consumer will be reluctant to buy a product again if it did not perform up to their expectation the first time.
Another concern with the post purchase behavior is a most high cost purchase. A buyer may experience cognitive dissonance, questioning the wisdom of the decisions. The negative factors which associated with the purchase will seem greater, and the disadvantages of the options will not take for the less important. Okay. Now, post purchase में क्या होता है? We will going to evaluate what we have buy, whether what we have buy is the correct options for us or not, whether what we have buy is good or whether we need to change that. दिस इज कॉल्ड पोस्ट परचेज स्टेज. इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ. सपोज कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई सा भी प्रोडक्ट हम घर में लाते हैं, उसके बाद उसे ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं. हर एक मेंबर्स घर के अपना अपना वहां पर ओपिनियंस रखते हैं. ठीक है, अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसा खरीदा, अच्छा तुम अगर ये थोड़ा सा और बेटर क्वालिटीज में चला जाता और थोड़ा सा इसको 100-200 रुपया ज्यादा देता, तुमको इससे बढ़िया क्वालिटीज मिलता. कोई एक जन बोला नहीं कलर तो अच्छा है लेकिन क्वालिटीज जो है थोड़ा सा डाउन हो गया, इससे बेहतर आपको ये क्वालिटीज मिलता. तो डिफरेंट ओपिनियंस आर देयर. वो डिफरेंट ओपिनियंस को अगर आप असेंबल करके रख के वो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, फाइनली आपका परचेज, फिर आपका सेलिंग, आपका जो परचेज है वो सक्सेसफुल होता है. अगर आप उस ओपिनियंस को लेने के बाद यू गोइंग टू go for the next option, that is repurchase option. We will going to exchange option or repurchase option. What is the exchange and repurchase option? उसे वापस कर देना है, दोबारा फिर उस प्रोडक्ट को लाना है. ठीक है, ये फिर फाइनली स्टैंड अप होता है. अगर ये आप करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट्स खरीदना हुआ वो फिर बेकार हो जाता है, क्योंकि दोबारा फिर आपको वो प्रोडक्ट के लिए दौड़ना पड़ेगा. So these all are the different stages of purchasing products. So here we comes to the end of unit 2. The unit 2 here ends. ठीक है, थैंक यू मैम. कंप्लीट हो गया.